application, Lordship. First bail The application, first one was dismissed after noticing so many factors. Lordship, 16/10/2020 को, Lordship. इसको merit पे dismiss हुई है. Lordship. Now, how much period you have undergone? 9 साल 9 years old, Lordship. Custody report is also there. So total 9 years, 2 months. And this application is on whose behalf? Applicant number 1, Arvind Barman, Number one. Lordship. Applicant number 2 on bail, Lordship, 16/10/2020, Lordship. Number two की dismiss हुई थी वो. Lordship. And yours is also first one or second one? फर्स्ट की लॉर्डशिप 13/3/2020 को बेल हुई लॉर्डशिप 13/3/2020 को. एप्लीकेंट नंबर 2 की लॉर्डशिप जितेंद्र. 13/3/2020 को बेल हुई थी या डिसमिस हुई थी? नहीं, ये बेल हुई थी लॉर्डशिप. एप्लीकेंट नंबर 2 जितेंद्र की. And 16/10 को नंबर वन की डिसमिस हुई है. लॉर्डशिप. So you are seeking suspension of sentence on behalf of number one only. Number 1. Repeat. His application was dismissed on 16th October. लॉर्डशिप रिपीट बेल एप्लीकेशन लॉर्डशिप कस्टडी ग्राउंड लगाया लॉर्डशिप. It is 302. लॉर्डशिप. लॉर्डशिप इसमें एप्लीकेंट नंबर 1 से जो है वो उसका डिसीज का मोबाइल सीज हुआ था लॉर्डशिप, लेकिन मोबाइल का कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है किसी का है और ना ही उन्होंने कोई बिल पेश किया था. बिल की केवल फोटोकॉपी पेश की थी जो कि एग्जिबिट नहीं हुआ लॉर्डशिप. उसमें लास्ट सीन एविडेंस का केस है लॉर्डशिप इसमें. What was the cause of death? हेड इंजरी लॉर्डशिप. हेड इंजरी है. PW8 लॉर्डशिप डॉक्टर PN दीक्षित. What was recovery effected from you? रिकवर रूप से लॉर्डशिप मोबाइल की जब्त हुआ. डिसीज का मोबाइल जब्त हुआ लॉर्डशिप से. डिसीज का मोबाइल जब्त हुआ था. एग्जिबिट P6 लॉर्डशिप. लेकिन उसका आइडेंटिफिकेशन नहीं हुआ कि मोबाइल किसका है लॉर्डशिप. ना ही उन्होंने प्रोसिक्यूशन ने उसका बिल पेश किया था कि ये मोबाइल किसके नाम पे था लॉर्डशिप. Purse was recovered from? एप्लीकेंट नंबर 1. एप्लीकेंट नंबर फर्स्ट रिकवर हुआ था लॉर्डशिप एप्लीकेंट नंबर 2 से लॉर्डशिप. उसका भी आइडेंटिफिकेशन नहीं हुआ था लॉर्डशिप. So that purse was not identified by any witness. लॉर्डशिप. From this appellant number 1, recovery was of मोबाइल 1 SIM card and memory card. And whether that mobile was identified by the family members. identification है. नो लॉर्डशिप. As per the Malot finding, is the PW. केवल प्रोसिक्यूशन ने उसका मोबाइल का PW5 मोबाइल का फोटोकॉपी जब्त की थी लॉर्डशिप. उसको एडमिट नहीं कराया लॉर्डशिप. Seizure, let's see seizure memo of mobile. Malot that as per the in of the PW5 Malot. मेरे सामने आज से लगभग 1.5 साल पहले पूछताछ की थी अभियुक्त पैराबन PW5. अभियुक्त अरविंद से मोबाइल के बारे में बताया था. उक्त मोबाइल मृतक विकास का था एवं मोबाइल अरविंद ने कपड़े एवं पर्स के बारे में बताया था. पर्स विकास का था. आरोपी अरविंद के से संबंधित मेमोरेंडम प्रदर्शी बने. आज से अभाग को मेरे हस्ताक्षर अरविंद ने मोबाइल अपने घर में रखे बिस्तर से निकाल कर दिया था. Who says this? This PW5. Namely, Sonu Jain. He is witness. he is witness of recovery of Yes. mobile. Recovery of the witness. And then Malot another witness also. What is the relationship of this witness with the deceased? He was the nephew inside of the house, Malot. He is residing in On South. what basis he said that mobile was of deceased? Recovery part all right. In his presence, mobile was recovered. Whose mobile was that? Mobile was the Vikas. Deceased. Deceased. Yes.
On what basis he is In- saying that that in- mobile was of The mobile was recovered from the possession of the present applicant in house of the present applicant. question is slightly Mobile was different. possession. Question is slightly different. Malot. Mobile was recovered. Yes, Malot. किसका था मोबाइल? ये किसने Because कहा कि- report he did it. He registered it. Mobile was the because he is identified. कौन PW5. आइडेंटिफाई करने वाला है कौन? PW5. क्या रिलेशनशिप है डिसीज के साथ? He is the friend of the deceased. He was a friend of the deceased. उसने किस बेसिस पे वो मोबाइल आइडेंटिफाई मैं किया? रहता था तो मालूम है मोबाइल निकालू मैं देख रहा था मोबाइल तो साथ में। सारे एक से ही होते हैं. वो क्वेश्चन इन्होंने किया ही नहीं इस बात के लिए ये कहीं Whether he नहीं was cross examined on what basis he identified the mobile of the deceased with reference to any purchase slip? ये मतलब कैंडी सी पैरा 6 अदरवाइज तो जैसे वो पर्स अनआइडेंटिफाइड रहा, मोबाइल भी आइडेंटिफाइड रहेगा. मैं 2 बजे के बाद अपनी दुकान पर वापस आ गया और कहीं नहीं गया तो उसने कहा कि जिस दिन घटना हुई थी उस दिन की बात कर रहा हूँ, मुझे तारीख का ध्यान नहीं है और थी उस दिन 14/3/16 की तारीख थी या नहीं, क्योंकि कि ना 1-1.5 साल पहले पुरानी है घटना सॉरी, तो मुझे दिनांक का ध्यान नहीं है. सही है कि जिस दिन घटना हुई थी उसी दिन मैं घटना स्थल पर गया था. रिकॉर्ड है वह. जिस दिन घटना हुई थी उस दिन मैं घटना स्थल पर गया था. ये सही है कि दोबारा घटना स्थल पर नहीं गया. मैं आज न्यायालय में घर से 12 बजे निकल गया. यह सही है कि आज मैं गवाही देने मृतक की मां के साथ आया हूँ. तो उसने कहा कि मुझे गवाही की आज जानकारी नहीं है. यह सही है कि आज की गवाही की जानकारी. इस विटनेस ने तो पर्स भी आइडेंटिफाई किया था, फिर भी बेल होगी उसकी. तो मालूम कैंडी सी लास्ट पर्स का आइडेंटिफाई किया था, उसकी बेल होगी. मालूम मतलब कैंडी सी मोबाइल भी आइडेंटिफाई किया है, उसकी बेल नहीं हुई. PW1 मालूम कैंडी सी स्टेटमेंट लास्ट PW1 PW2. You read out any statement of any witness identifying this mobile He or was- for the statement of PW5. Followed Mary description. He was came in the house of the deceased and called to her and along with motorcycle ले गया. अभी ये देखे पैरा थी मदर ऑफ द डिसीज. सुबह उसने दिनांक 10 मार्च 2015 की रंग पंचमी घटना. मेरा पुत्र उस दिन 8-9 बजे दुकान गया था, जहां से वह 1-3 बजे दोपहर से घर वापस आया था और हाथ मुंह धोया और मुझसे बोला कि पैसे दे दो. तो मैंने उससे कहा कि बेटा खाना खा लो तो खा लो. तो वह बोला कि उसने खाना खा लिया है. उसी समय अरविंद, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट, उसी समय अरविंद बर्मन और जितनी सोनी गाड़ी लेकर आए और आकाश से बोले कि चलो. तो आकाश ने मुझसे कहा कि मैं थोड़ी देर होली खेल लूं फिर दुकान पर चला जाऊंगा. तो मैंने उनसे कहा कि ज्यादा देर होली नहीं खेलना, पैसा लेकर दुकान चले जाओ. उसके बाद आकाश अभियुक्त अरविंद और जित्तू के साथ चला गया था. फिर उसके बाद आकाश लौटकर घर पर नहीं आए. दिस वेरी ये कौन PW1 का रही है? मदर PW1 यस PW1 मदर सुमन. यस सुमन. तो सुमन कह रही Then है again the same on the date of, on the PW date of incident हाँ this अरविंद बर्मन यस और जो दूसरा कौन है, No. they took the deceased from the house. both are they came in my house and they after the उसको लेके और चले गए. And the dead body recovered in possession of the present applicant. उन्होंने जाके बताया कि यहाँ पर ये सामान पड़ा, यहाँ पड़ा हुआ है. आर्टिकल 3 फ्रॉम द पोजीशन ऑफ ये कल्लू शाह ने क्यों नहीं बोली बात? ये जब इंक्वेस्ट में कल्लू शाह एग्जामिन हुआ, जो मैटरनल अंकल है डिसीज्ड का, जी. उसने ये बात क्यों नहीं बोली कि ये उस दिन ये दोनों या तीनों आदमी आके? But the reciting the separate place malot. The woman is the recited in the house of the deceased. यार उस इंक्वेस्ट के टाइम में कल्लू शाह आल्सो सेड समथिंग. He didn't disclose this fact that the disease was taken by these persons in the presence of his mother. अभी देखिए सेम इज द स्टेटमेंट PW3 malot. PW थर्ड लाइन. मैंने देखा कि वहां पर आकाश अरविंद और जित्तू धोनी पहाड़ी पर बैठकर शराब पी रहे थे. मैं सोच करने के बाद वापस आ विटनेस भी तो दोनों का नाम ले रही है ना. ये PW1 ने भी दोनों का नाम लिया. हाँ दोनों का. वो एक की बेल होगी, पैरिटी पे इसकी बेल नहीं होनी चाहिए. Because of the sufficient evidence against the person malot.
What is that sufficiency of that evidence Yes, over and above the As evidence per the statement of the considered by the court? as per the statement of PW3, PW1 and PW5, they are the clearly stated against the person. PW1 तो उसका नाम ले रही है, उसका भी तो ले रही है, नहीं कर ले रही है ना सर। दोनों उसका हाँ। की बेल होगी, ये। एक की तो बेल होगी, उसमें रिकवरी पर्स की भी थी, उसकी बेल होगी, मोबाइल की रिकवरी बेल नहीं हो रही, स्टेटमेंट तो वही रहेगी को बोथ रिकवरीज। आप PW1 की स्टेटमेंट और PW5 की स्टेटमेंट से डिस्टिंक्शन ड्रा करिए कि भी केस ऑफ अपीलेंट नंबर 1 इज डिफरेंट देन द केस ऑफ अपीलेंट नंबर 2 फॉर द पर्पसेस ऑफ सस्पेंडिंग देयर सेंटेंसेस। व्हाट इज डिस्टिंक्शन, पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन? अदरवाइज पैरिटी पे तो सेम एविडेंस, पैरिटी शुड बी ऑब्जर्व्ड। It is only last seen by PW1 and PW3. Last seen with both the accused. One is successful in getting suspension of sentence on the basis of same material. Yes, state. How you distinguish? Same evidence is there. Even human blood was also found on the cloths recovered from the applicant. So that has also been found in the that co-accused also. Co-accused के blood था, Blood था. कपड़ों पे. Okay, so Whether it was human blood? it's a human blood. कोई grouping भी थी क्या? Grouping नहीं थी. Human blood का है. मतलब the statement of PW7. He the clearly stated. The one say paint insert was required from the position of the president of Arvind Malot. Yes, how much is the period undergone? More than 9 years. More than 9 years. 9 years, 2 months. PW7 का स्टेटमेंट का आप काइंडली से था स्टेटमेंट ऑफ जाने दो मेमोरेंडम साहब, चेक नहीं किया था मेमोरेंडम पर जाने दो, सरकारी खर्च क्यों कर रहे हो? आने दो बार, फ्री की खा रहा है, अपनी खाएगा। एप्लीकेंट अपीलेंट नंबर Number 1 note, sir. 1 seeks suspension of sentence in CRA 1781, suspension of sentence in his second attempt in CRA number 1781 of 2017. yes 2 months. First application was rejected. First application, that is IA number 5547 of 2020, was rejected on 16th October 2020. And counsel for the applicant appellant submits that the applicant appellant has already undergone 9 years 2 months. and 2 months of actual custody as on date. With remission है Without remission, Lord, sir. Actual. As 9 on years 2 months है मानो the revision is not 9 years 2 months of actual sentence as of now. The role of the applicant appellant with reference to statement of Srimati Suman PW1 and Devendra Kumar Sen PW3 cannot be distinguished from that of co-convict Jitu Lord, sir. Soni, who has already been granted benefit of suspended sentence void order dated 13th March 2020. The aforesaid witnesses have identified the purse and mobile of the deceased having been recovered from Jitu Soni and the applicant respectively.
the deceased was lastly seen in the company of the applicant number 1 and co-convict Jitu Soni. Mobile of the deceased was recovered from the applicant appellant, whereas purse of the deceased was recovered from co-convict Jitu Soni. One of the factors which has been considered against the applicant appellant is that the mobile was identified by PW5. Yes, That's it. PW5. 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 PW5, who happens to be, कौन है ये? He's a close friend. Neighbor, Close friend. who happens to be close friend of the deceased. Learned counsel for the appellant submits that the testimony of PW5 would remain on debatable note, inasmuch as that the alleged identification of the mobile has not come forth with reference to any other mark of identification of the mobile, that the same was of the deceased. By overruling the other hypothesis, full stop. The last seen version, if tested on the basis of statement of PW1, Srimati Suman, and the inquest report dated 11/3/2015 lodged by Kallu Sahu, maternal uncle of the deceased, then the same would also remain debatable. The case diary statement of Srimati Suman, PW1, was recorded by the investigating officer on 12/3/2014, whereas the dead body of the deceased was found on 11/3/2014. Full stop. On the strength of aforesaid submissions, counsel for the appellant submits that the petitioner is also entitled to the benefit of suspended sentence on parity with that of co-convict Jitendra alias Jitu Soni. Per control and state counsel duly assisted by counsel for the complainant oppose the application on the premise that the recovery of seized mobile has been proved beyond all reasonable doubt. Full stop. Having heard counsel for the parties, we deem it appropriate to consider the factum of recovery of purse from the co-convict and appreciate the same on the same parameters as that of recovery of mobile from the applicant appellant. Full stop. Though the applicant appellant remained unsuccessful in his first attempt when IA number 5547 of 2020 was rejected, but having considered the period undergone by the petitioner even after 60/10/2020, thereby totaling more than 9 years, 2 months, period of 9 years, 2 months, we deem it appropriate to grant
benefit of suspended sentence to the applicant appellant, subject to his furnishing adequate bail bonds and surety bonds to the satisfaction of concerned Chief Judicial Magistrate. Nothing expressed herein above shall be construed to be an opinion on the merits of the case. And one of the condition may be imposed, and he is not threatened to the family member of the deceased. हाँ जी, जो थ्रेट ना करे फैमिली मेंबर को अब आपकी ग्राउंड फॉर रिजेक्शन है वो, तो आप अपना फोर क्लोज कर रहे हैं, राइट। एक FIR लिखवा गए और एक कैंसिलेशन की एप्लीकेशन